நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I'm profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome everyone present here today on the auspicious occasion of our institution's Grade 5 Annual Day celebration. I always take pride in saying that this is the institution I belong to because of the unity, integrity, and moral it upholds. I'm honored to address our esteemed Chief Guest, Honorable Founder and Correspondent Dr. S. Rajan, President Mr. K. S. Raja, Secretary Mr. M. Singaravelu, Treasurer Mr. S. Rajarajan, and all our management members present here to make this day even more special. Next, I would like to welcome our principal, Mrs. P. Gayatri, who motivating us to build a great achievements. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. With immense pleasure, on behalf of my school, we welcome our dear parents. At last, I would like to all the teachers, other staff members, and all the students present here to make this ceremony worthwhile. Once again, I welcome you all. Every child is possessed with innate talents, some in the stream of science, some in history and geography, and others in sports, dance, etc. By presenting these talents on the stage, credential or creditor to win confidence, courage, and triumph. Now it's time to showcase our students' talents. सबको नमस्कार। मेरा नाम वी ग्रीवन कनिश है। मैं छठी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं चीना की महान दीवार के बारे में बताना जा रहा हूँ। चीना की महान दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। इस दीवार की लंबाई 6300 किलोमीटर है। यह चीना की रक्षक है। धन्यवाद। தமிழ்
बताना जा रही हूँ। ईफिल टावर फ्रांस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। इस टावर के रचना गुस्ताव ईफिल बनाया था। धन्यवाद। Hello guys, my name is S. Cornelius. I am telling exercise number 1. Exercise number 2. Exercise number 3. Exercise number 4. Exercise number 5. Thank you guys. Good morning to all. I am S. Jaishika Vashni. In this video, I am going to make a palgova. You can see the video. Now we started the stove and now we can pour 1 cup of milk. We can take out the it is pasting that is we can take out. We should mix it more. It is heated now. We can put sugar how much we need. I have put in 2 spoons of sugar. Now we can mix it. Now we can pour ghee. 1 spoon we have poured and we can mix it. Because we have to pour more spoons of ghee because it want to be so strong, so we are pouring another spoon of ghee. Now it become hard. Now we can place it in a bowl. Wow, now we have done the palgova. We can cut it into shapes which we like. Now I am going to cut it into square shape. Okay, we have cut it into the square shape. Thank you.
प्रसन्न श्री कुमरन है। मैं छठी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज मैं लाल किला के बारे में कहना चाह रहा हूँ। लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। यह सम्राट शाहजहां ने बनाया था। यह लाल पत्थरों से बनाया गया है। यह महान ऐतिहासिक स्थल है। धन्यवाद। Here's in front of you to show that our students are not only interested in studies but also in agriculture. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி விவசாயி இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் ரா வினித் ராகவ். I feel honored to propose this vote of thanks. I would like to thank our chief guests for sparing their valuable time for us and gracing this event. Your thoughts have motivated all of us. I would like to express my deep sense of gratitude for the principal, teachers, non-teaching staffs to take great efforts. We are highly grateful to our students and parents for supporting us and taking part in this event with great enthusiasm. Thanks one and all.
and I would like to take leave with the feelings of happiness and gratitude. Thank you. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध